Fill in the blanks. First, central bank has the dash of note issue. Central bank के पास monopoly है note issue की. So central bank has the monopoly of note issue. Next, the central banks acts as a dash of cash reserves of commercial bank in the country. Central banks acts as dash of cash reserve of commercial banks in the country. So कैसा एक्ट करती है सेंट्रल बैंक? Central bank acts as custodian of cash reserves of commercial bank in the country. It acts as custodian. So अपने पास सुरक्षित रखती है. तो आंसर हो गया कस्टोडियन. Next, bank rate is also called as dash rate. Bank rate is also called as rediscount rate. Next, Reserve Bank in India was established in dash. It was established in 1935. Next, the currency note issued by central bank are dash legal tender. They are option देखिए limited, unlimited, restricted या nil. They are unlimited legal tender. Next, central bank is the dash of bank credit. क्या है central bank? Creator, controller, supplier या manufacturer? कंट्रोल करती है ना सेंट्रल बैंक. सो कंट्रोलर. नेक्स्ट, डैश इज क्रिएटर ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक या गवर्नमेंट बैंक? जनता तो कमर्शियल बैंक के पास ही जाएगी डिपॉजिट रखने या लोन लेने के लिए. सो commercial banks is creator of credit. Commercial banks. Next, bank rate is dash measure of credit control. Bank rate कैसा measure है? Quantitative, government, selective या qualitative? It is quantitative measure. सो एक बात ध्यान रखना, क्रिएटर ऑफ क्रेडिट कौन है? कमर्शियल बैंक. जबकि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन है? सेंट्रल बैंक. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई? 1935. एंड नोट इशू करने की मोनोपोली किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास. आगे के फिलअप्स इन द नेक्स्ट वीडियो.